हेलो गाइस। हेलो हेलो। ऑडियो ऑडियो ठीक आ रहा है। लेट मी चेक। लाइव। मीटियोर फ्रेमवर्क। कहाँ पे हो सकता है? अब मैं स्ट्रीम को कहाँ से देखूं? ओके, दिस इज नाइस एंड दिस इज आल्सो नाइस. So settings and then that settings stream. Okay, ये connected है. But where do I see the stream output? क्या मेरी स्ट्रीम प्राइवेट है? पब्लिक. Why can I? Why can't I watch it? Mm, Timestamp participants. ठीक है, learn more. ठीक है, यहाँ से भी नहीं आ सकता. सो हम लाइव है कहीं पर एंड वी हैव नो आइडिया वेयर वी आर लाइव. ओके, यूट्यूब अकाउंट. लेट्स सी. यहाँ पे ही जाते हैं, कहीं तो होगा. व्यू योर चैनल. ओके, सो वी आर लाइव. आइडिया वेयर वी आर लाइव. ठीक है, चल रहा है. चल रहा है, चल रहा है. सुपर बेस बन, चैट जीपीटी बन, ये भी बन, वो भी बन. एंड ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. सो गाइस, टुडे आज का हमारा एजेंडा है कुछ करने का. सो लेट्स ओपन समथिंग कॉल्ड ब्रेव एंड and we'll go here. Okay, so what we are trying to do is, and फटाफट मैं अपना स्ट्रीम आउटपुट यहीं पे रख देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा. सो हमें ट्राई करना होगा कुछ हम गड़बड़ ना कर दे. एंड लेट्स जस्ट, कैन वी डू दिस? एंड स्ट्रीम वर्क कर रही है. हाँ, सो वर्क कर. सो सो दिस इज द ऐप वी बिल्ट. बट हमें कुछ पता नहीं चल रहा है इस ऐप के अंदर. सो लेट्स सी. सो दिस इज द ऐप. ये बटन काम नहीं कर रहा. ये बटन काम कर रहा है बट समथिंग इज रॉन्ग. सो अभी हम समझने की ट्राई करते हैं फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन रेदर देन चैट जीपीटी करके. नहीं करना है. सो ये हमारा हेलो वर्ल्ड ऐप है. लेट्स जस्ट ग्रैब इट लाइक दिस. वेरी नाइस. एंड ओके, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं. सो वी आर गोइंग इनसाइड ऐप एंड आई थिंक सो टेलविंड अप्लाई नहीं हो रही है. सो वी माइट नीड टू इंस्टॉल टेलविंड. सो हाउ डू यू इंस्टॉल? Install new lab in Meteor. How do we do it? I think this will be very better. And थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं. Install. How do I install Meteor Atmosphere Package Manager? Okay. Install Meteor. वो ठीक है. Operating system ठीक है. Okay. Might need help of GPT here. Let's just try to install. Okay. ठीक है. ठीक है. ओके.
On this way, Meteor.js add public JS directory. ओके, ठीक है। तो इससे तो समझ में नहीं आ रहा। हाउ टू ऐड अ how to add tailwind css to my Meteor project. Let's have a sip of water. Okay, so it's simple enough like this. Okay, कभी मेरा था मन, मेरा ना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो। सो टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। We can initialize it. Node is not recognized as an internal or external command. What D here? CLS node version. Okay. Okay. Now node नहीं चलेगा। npm एक मिनट प्रोजेक्ट को रोको। node version node version। so ये node को क्यों recognize करना बंद कर देते हैं? Okay, let's just delete this, open a new terminal, and we do this, and अभी भी node नहीं चल रहा है। So let's try to install this here. अब मीटियोर ही नहीं मिल रहा है इसको तो भाई। Okay, let's open PowerShell। इसको नोड मिल रहा है क्या? टर्मिनल। ओके, इसको नोड मिल रहा है क्लियरली। I am getting node px package.json। ओके, ये हो गया रन। अब क्या ये रन होगा? ओके, भाई ये समझ में। But PowerShell's npx command expects a globally okay, okay. So इसका खुद का नोड है, is it? Okay, fix options। ये तो अजीब बात है भाई, इसका सब कुछ खुद का है। प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? अरे छोड़ भाई, अभी इतनी ये प्रॉब्लम अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा। So meteor npm exec tailwind css.init/p meteor exec मतलब execute tailwind css init -p execc। Let's copy it। Error could not determine executable to run। Hmm,
आई हैव Node.js इंस्टॉल्ड। भाई ये पाथ प्रॉब्लम वन ड्राइव की मैं थक चुका हूँ। ठीक है, इसको वन ड्राइव से हटाओ। confirm node is installed globally, rerun tailwind using your global node. Okay, let's try this one first. Okay, let's just delete all these terminals. Let's do okay, and then let's drag and drop again, क्योंकि अब तक कमांड्स चल रही थी। ठीक है, and then do this and do this and then do this. Okay, node is not found. Let's try to use the internal node, which is this one. Okay, what about this? इसको ये भी नहीं मिला node version. चल चल. So let's just get this project out of here. So इसको यहाँ से हटाकर D ड्राइव के अंदर कहीं रखना पड़ेगा। Projects, E drive, games, Deepak G, database, program files, Windows app. लेट्स सी किसके पास स्टोरेज ज्यादा है, एंड इसके पास है, सो यहाँ पे आएगा। बहुत सारा डेटा है। Does Meteor has its own node and database? Why? ओके, ठीक है। ओके, अपना कंप्लीट होना है। ओके, ओके नहीं बोलना भाई, डेटा वेस्ट होगा। दीवाना दीवाना समझे ना, कभी चुप चुप रहे, कभी। अपने ही स्ट्रीम का आउटपुट अपने ही उसमें देखने का मजा ही कुछ और है भाई। इसको थोड़ा कर दो कम। चलो, अच्छा चल रहा है वैसे इंटरनेट। ऐसे चीजें बोलनी नहीं चाहिए। ओके, कंप्लीट हो गया। देन विल ओपन इट हियर एंड विल ड्रॉप इट हियर। आई ट्रस्ट द ऑथर्स। मेरे को नोड इधर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ना, राइट? नोड भी, इसको नोड इधर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू ओपन पावर शेल हियर। लेट्स डू नोड भी, इसको नोड नहीं मिल रहा है। मेश्योर कर सकते हैं क्या इधर? ओके, सो नोड क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को ये आइडिया नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग। और ये बैश और इसका भी नहीं चलना। ओके, ठीक है, इसको बंद कर सकते हैं। और ये वाली कमांड चला दो।
भाई ये मैं बस पता है कब से ट्राई कर रहा हूँ इसको यूज करने का। सैंडबॉक्स में करूँ क्या इसको चलाऊँ क्या? फूड सैंडबॉक्स। क्योंकि मैं थक गया हूँ। साइन इन विद गूगल ऑब्वियसली। मीटियोर। पाइथन व्यू है, डॉकर है, नेक्स्ट जेएस है, एचटीएमएल सीएसएस। अब मैं इसमें इसमें ब्राउजर, वर्कस्पेस, ये ओके ऐसे भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ इसमें? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को रेपो छोड़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? एक बार विंडो क्लोज करके देखते हैं, कंट्रोल सी, वीएस कोड, नोड भी। वर्बोस सीएलआई, ये फलाना ढिमकाना। I'll get this. Perfect deadlock confirms everything. Meteor is running node inside its own dev bundle. You run npm look inside your could not find an executable script for Tailwind CSS. Okay, why it happens? Meteor's internal development environment isolates executables differently. Unlike normal npm setup, sometimes binaries, especially in Windows, the fix don't rely on exec. भाई ये तो वर्क ही नहीं कर रहे। ओके, क्लियर नोड। मैं क्या बोलूं? I moved my projects to a D drive where I am getting node node v node version is not recognized, and it also occurred on the C drive. What's the issue? Let's go in PowerShell. Where's node? I don't get it. Node. Is it because of space? मेरे ड्राइव में स्पेस कम है। 6 GB। भाई है npm वर्जन है। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई? अब इनको नोड ही नहीं मिल रहा है भाई। वाह। अब मैं क्या बोलूं भाई?
कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटर रन होगा। एंड देन नोड वर्जन इधर आ रहा है एज एडमिनिस्ट्रेटर। एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करवाना पड़ेगा क्या? अरे यार, मैं थक चुका हूँ भाई। अल्टेक्स एंड इसको भी कोड करेंगे, वीएस कोड। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे ताकि ये स्टार्ट हो एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड वी स्टार्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे, अरे यार, ओके, लेट्स सी, कोई खुला नहीं है। And let's go to D drive and in the Meteor यहाँ रहा and hello world यहाँ पे डाला। ठीक है। ओके, नोड वर्जन, ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चालू है, नहीं हुआ है? अरे यार मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है भाई। ठीक है, स्टार्ट किया। ओके, नोड वर्जन। भाई इनको कौन सी गाली दो भाई? Let's try this here. Okay, could not find executable to run। ठीक है, ठीक है। एंड टेलविंड कमांड तो नहीं चली। एक बार ये वाली कमांड चला के देखे क्या? ओके, नोड वर्जन। ओके, node is working but tailwind is not installed। Initialize npx version and also npx is squared। आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। ओके, सो ये नोड नोड मॉड्यूल सारे उड़ाने पड़ेंगे और सारे इंस्टॉल भी हो गए। एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। लेट्स डू इट मैन्युअली। ये उड़ा दो भाई सब कुछ। ओ भाई उड़ गया। ठीक है, अब npmi करो, पैकेज लॉक जेसन भी उड़ा दो। npmi करो। म्यूच्योर का खुद का बंडलर है और फिर वो लोग ज्ञान यूज कर रहे हैं। तो ये सब मैं कर रहा हूँ रॉकेट चैट गिटहब ये वाली रेपो को समझने के लिए। अब ये समझने के लिए मुझे एक फ्रेमवर्क समझना है। वो समझ रहे हैं ये वाला मीट्रियोर। अब इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए ये सब झंझट हो रही है भाई। ये रिपोजिटरी जितना हमें समझ में आया है, ये ऐप फोल्डर के अंदर इनका सारा डेटा है। ये मीट्रियोर है, ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सर्वर है एंड देन इसमें इंपोर्ट्स करके भी एक ओके, ये क्लाइंट है एंड देन ये इंपोर्ट है। ये बीच की लेयर है इसके अंदर सारा क्लाइंट। ओके, डोंट नो। ओके,
ठीक है, ये हो गया। अब पैकेज डॉट जेसन भी आ गया होगा। ओके। कुड नॉट डिटरमाइन द एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, खुद से बना लेते हैं भाई, तुम मत करो ये सब। tailwind css tweet guide and installation frameworks and guides। Meteor है क्या? Meteor ये रहा। npm install। ओके। इनका अगर रेफरेंस देखे तो इन्होंने ये दे रखा है। अच्छा ये रहा। कौन कहाँ गया इनका रेफरेंस? सैंड बॉक्स ये रहा। ओके। रिएक्ट टू डूज। ये लोग टेलविंड यूज नहीं कर रहे हैं। आई थिंक सो। Yeah, they are not using Tailwind, but we are. Okay, Tailwind install हो गई है। And then post config। ये रहा। Imports UI post config। post config ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा। ओके, सो यहाँ पे एक post डॉट config डॉट mjs करके फाइल बनाने को बोलिए। post css f2 एंड ये कॉपी पेस्ट करना है। ओके। क्लाइंट के अंदर मेन के अंदर ये वाला डालना है। ठीक है। एंड ठीक है। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विथ npm start run start meteor run। ओके 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 ओके। एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है गाइस, लेट्स वेट। HTML server MongoDB started proxy। Meteor server started, control C। Oh, working। and this they नहीं work कर रहा है। add and okay। ठीक है ठीक है। task dot remove is not available on the server, please remove async use करो। so task dot js के अंदर remove asy कहाँ गया? ओके। एंड इसको async async फंक्शन बनाना होगा। ओके एंड ऐड करूँ न्यू there there and here। सो बेसिक हमारा एप्लीकेशन तो बन गया भाई। ठीक है। सो इसका इंस्टॉलेशन नहीं समझा पा रहा था गांडू। और मतलब नोड भी इसके साथ जल्दी वर्क नहीं कर रहा है, मतलब बहुत झंझट है। लेट्स सी, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सेंड करना पड़ेगा। सो सब पैकेजेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है। अगर भी देखे टेलविंड है अपने पास, पोस्ट लोड सीएसएस रिएक्ट है, मीटियोर मेन मॉड्यूल क्लाइंट सर्वर। सो क्लाइंट में इसके पास एक ही चीज है। ठीक है। ओके। एंड देन वी हैव इंपोर्ट्स, और इसके अंदर यूआई है और एपीआई है। सो यहाँ पे ये कलेक्शन है टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। ओके ओके।
ठीक है। एंड इधर इधर अगर अपन देखें, क्लियर द इनपुट आफ्टर सक्सेस वट एवर द फक दैट इज। ये यहाँ से एपीआई है, कैसे कॉल कर रहा है, मीट्रियोर कॉल कर रहा है टास्क डॉट इंसर्ट को। और और ये मीटियोर मेथड के अंदर ये वाली मेथड कॉल हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पीट है, ये हटा दे भाई। आंखों में नंगी जाने को पीजीआर, ये किसके कारण आ रहा है? बॉडी सीएसएस। वेरी नाइस। और इसका पीएट रहने दो भाई, ठीक है। इसका हॉट मॉड्यूल रीलोडिंग मेरे को पसंद नहीं आ रहा भाई इतना। मैं वीट भाई, वीट सैल्यूट है भाई, वीट एकदम फास्ट एज फक बॉय। ठीक है, अब मैं रिलोड करूं। तो ये ऐड करने में भी तो ले रहा है। ओके, तो हम सही कर रहे थे, इसने जीपीटी की माँ की आंख भाई। इंसर्ट कॉल हो रही है। अब मेरे को टास्क एपीआई में जाना होगा, यहाँ पे इसको सिंक बनाना होगा। एंड देन इसको इंसर्ट आई एन इंसर्ट सिंक बनाना होगा। ठीक है, ओके। अब सब बंडल करके तो आ रहा है, बट डेटाबेस मेरे को ब्राउज करना हो तो कैसे करूंगा मैं? ये तो चैलेंज है भाई। ठीक है, ओके। लेट मी ऐड अ टास्क, देन टेस्ट अ टास्क। टेस्ट को हटाएंगे तो टेस्ट ही जाएगा। रिमूव करना है। अब मेरे को इसका टाइम स्टैम्प देखना है, तो task and this and will show created at, okay, uh, refreshing the client, okay, refresh हो रहा है। आई थिंक एरर आ गया कुछ। कंसोल error occurred concerning a error boundary. Okay, something fuck up has happened. Okay, task collection created task dot key, task ही पास कर रहे हैं। क्रिएटेड ऐड के हिसाब से अगर सॉर्ट हो रहा है, सो टास्क के अंदर अगर हम क्रिएटेड ऐड कर दें, ओके, लेट्स डू दिस। ठीक है, इसका ये भी ठीक है। ये रैप वो हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब वर्क कर रहा है। सो व्हाट वाज द इशू? पहले तो इसके कुछ ठीक करो भाई। तो ये डेटा फेचिंग और ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है? रिएक्ट में सब फेच होता है, इसमें तो कुछ फेच। डीडीपी क्लाइंट और स्क्रिप्ट 200 आ रही है। मीटर और बेबल डायनेमिक ग्लोबल मीटर डेटा। This is a generated file. You can view the source in your browser if your browser supports ये Mongo hash। भाई ये सब क्या है यार? हॉट मॉड्यूल रीलोडिंग,
जीपीटी से पूछना पड़ेगा अपने को। हाउ डज डेटा गेट fetched in a Meteor application, and how can I see it on network request? All right, ठीक है. Publication Meteor publish on server. The server defines what data client can subscribe to. Task publish task में हमने publish करा है return task dot find user this dot user ID subscriptions. The client subscribes to publication. Meteor automatically sends data over the WebSocket connection. Mimingo. Subscribed data is sorted locally in client's Mimingo, which is a mini MongoDB in the browser. Reactive happens automatically when the method. Okay, filter by WebSocket, WS or WebSocket. Let's do a reload. Messages. Session connected. Collection, Meteor client version. क्रॉस डेट आ रहा है. Message subtracted. Let's do this. Removed collection और आईडी है. मैसेज अपडेटेड और ठीक है. अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड तो हो गया. अब ये किधर गया? ये अपडेट नहीं हुआ. अगर मैं रिमूव करता हूँ तो अब ये भी अपडेट नहीं होगा. इनिशिएटर हेडर और ये ठीक है. मतलब ओके, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन हियर. है, मैं क्या कर रहा हूँ? दो जगह खोल रखे क्या? इंस्टॉल डॉक नहीं चाहिए. इंस्टॉल ये बंद. ये वाला ठीक है. इसको साइड में रखते हैं. हेलो वर्ल्ड. और ये एक बार रिलोड करते हैं. ऐड करते हैं तो ऐड जा रहा है. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब सब्ट्रैक्ट नहीं जा रहा है. कहीं खुला रह गया क्या? डजंट लुक लाइक इट, बट ये वर्क कर रहा है. अब फैच में अगर देखा जाए, ऐड एंड देन रिट्रैक्ट सॉकेट. सॉकेट 101 आ रहा है. ठीक है. ये वाला इमोजी तो हटा ही देंगे. ठीक है. और बाकी सब ठीक है. बॉर्डर दे देते हैं भाई. बॉर्डर. इसका एचएमआर नहीं अच्छा है यार. मेरे को नहीं पसंद. और ये ब्लैक में आ रहा है. सो टेक्स्ट ब्लैक नहीं रहा. टेक्स्ट वाइट करेंगे. क्या करा चलो. ओ, नाक बंद. केला. सूप पी ले सूप. આપડા તો પેદા ही खाઈને बैठा भाई. क्या यार रोज रोज चार्जिंग होती रहती है.
ये ऐड हो गया, अब क्या करना है? काम तो થઈ ગયો, એડ જ કરવાનું બાકી હવે આને પુશ કરવાનું. ઓબ્ઝર્વ. ના ભાઈ ના, હું તો હોઈ જઈશ. Meteor client. Client is not server function. Strict equal. ओके, ये असर्ट करके कुछ यूज कर रहा है, बट इसका एचएमआर ठीक है. आंखों में डूब जाने को. क्लाइंट में ज्यादा कोड नहीं लिखना है, कोड यहाँ पे है ऐप डॉट इसमें. अब ये वाला एक खतरनाक काम है, ये यूज ट्रैकर. यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर रहे हैं टास्क को. ये रिटर्न कर रहा है अगर हैंडल ठीक है नहीं है. डॉट रेडी. ओके, अगर रेडी है उसका उल्टा. टास्क डॉट फाइंड, और ये कैसे कर रहा है? फेच टास्क. ओके, ये एपीआई में से आ रहा है और इसको हमने यहाँ से, अच्छा ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है. टास्क डॉट एपीआई डॉट फाइंड. ये सर्वर साइड रेंडरिंग करता है क्या? डज इट डू एसएसआर और सीएसआर? Meteor is a client-side rendering framework out of the box. Let me break it down. Meteor apps sends the bare minimum shell, subscribes to publication, and reactively renders the UI. Meteor can do SSR, but it's not automatic. You need to integrate React View SSR manually. Example. Okay, quick. Okay, got it. So ये क्या कर रहा है? ये कर भाई, इसका ये वाइब कोडेड लगता है, पता है? और इसको कौन यूज कर रहा है? कोड सिग्नल, प्लानेबल, ट्यूटर मुंडी, हाइव, वाइला, गैलेक्सी. गैलेक्सी तो ये खुद है भाई. फेवरो, लेजी, बटकानी. ठीक है ठीक है. नॉट बैड, बट अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके. और इन्होंने इन्होंने जो गाइडेंस दी थी, ट्रांसफॉर्म, हैंडल, सबमिट, अवेट, कॉल असिंक. तो ये तो कुछ असिंक कॉल करके कर रहे हैं, और हम कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फेच. अच्छा, ये तो इंसर्ट पे है. तो हम मीटियोर डॉट कॉल, ये असिंक कॉल है, हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया. और टास्क डॉट इंसर्ट कॉल कर दिया, टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और क्रिएटेड एट न्यू डॉट डेट डाल दी होगी. इंसर्ट, हमने बैकएंड में डाली है डेट. task collection dot find. Your app should look like this. Update and remove. Let's try to do update. Task.js, and we'll call it the update method, and we'll need task ID. If task ID is required to update a task. ठीक है. Okay, and update async. टास्क आईडी भी चाहिए हो रहेगा, and we'll need task text also. Task text is required. Update async. Update
collection dot update async, select a modifier and update async, await task clear update async. We want to select someone whose underscore id is equals to task id. ठीक है, and then we'll do uh, text is equals to task text dot run. Okay, task text. ठीक है, और एक और बटन देना होगा टास्क को, which is update. अगर अपडेट देंगे, const date flag set update flag use state false conflict update flag update flag true, update flag true कर देंगे, green. ठीक है, and then we'll make a update flag, अगर update flag नहीं है, and update flag input box text value const update tasks set update task is equals to use state const update task is equals to एक asynchronous फंक्शन होगा जो कि मांगेगा id and text. Post will do await meteor, कहीं से लाना पड़ेगा, यूज ट्रैकर तो नहीं लाना पड़ेगा, अपने को ढूंढना पड़ेगा meteor को import meteor from meteor slash meteor await meteor dot call meteor dot कैसे करा है, ये वाला करा है meteor dot call first argument is task dot update, अपडेट करा है और इसमें आर्गुमेंट पास करा है इन्होंने, अपने को तो दो देने हैं, पहले आईडी देनी है जो कि होगी टास्क डॉट अंडरस्कोर आईडी, देन अपने को देना है updated task and then error
एज अ कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। वैल्यू होगी इसकी अपडेटेड फ्लैग, अपडेटेड टास्क, ऑन चेंज, ऐड, अपडेट, कंसोल। ऑन क्लिक नहीं डिफाइंड है, क्या बात कर रहे हो? डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो फाइन इनफ। ठीक है, अपडेट एंड कंसोल में फिर भी ऑन क्लिक इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऑन डिलीट। ओके, ऑन क्लिक कर दिया मैंने, डबल ऑन क्लिक कर दिया जी। बिल्डिंग द एप्लीकेशन, भाई ये तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसा लग रहा है। चलो वेट करो, इतना सारा है। अपडेट एंड विल डू न्यू टास्क। एंड अब इसको सबमिट कैसे करेंगे? btn सेव एंड इसको रैप कर देंगे लाइक दिस। अपडेट फ्लैग। memory, network, and WebSocket. Update, console, save पे on click। मुझे अपडेट टास्क पोस्ट कॉल करना है, अंडरस्कोर टास्क डॉट आई डी। मेरे को आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आईडी दे देते हैं एंड टेक्स्ट भी यहाँ पे दे देते हैं एंड विल कॉल एट लाइक, यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल डू इज विल डू, सबसे पहले विल मेक अ कॉल, सो अपडेट टास्क पोस्ट and we'll do with task dot underscore id and the text will be update text task। ठीक है, ये हो गया। फिर set update flag false कर देंगे and set update task to this and we'll do
Reload. VT is very fast in reload, right? Add save. Meteor call is not a function. Okay, तो Meteor यहाँ पे हमने कहाँ से इंस्टॉल किया है? This Meteor is from अवेट लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है। और ये सिंक्रोनस भी नहीं है टास्क। वेरी नाइस। ओके, अब ये मीटरियोर कहाँ से आ रहा है? ये देखने की बात है। अपडेटेड से ओके। और ऐप में कैसे है मीटरियोर फिर? यूज ट्रैकर एंड देन मीटरियोर ये कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्ट हैंडल मीटरियोर यूज ट्रैकर के कारण आ रहा है। एंड कंसोल पे जाके तुलसी। This is classic me confusion. Root cause means that your is not available where you are calling it. Here is why it happens. In modern, you must import explicitly. Okay, so Meteor. Without this Meteor, make sure this code runs on the client. Meteor methods can be only called from client if this component server side won't exist on the server. Don't wrap it unnecessarily. चलो हटा देते हैं। ठीक है। Confusing if you want a promised based wrapper. नहीं चाहिए भाई promised based wrapper. Update new save. Calling that method अजी नहीं कर रहे call. That's how it works. We save it and save हो गया। नेटवर्क में जाए एंड वेब सॉकेट के अंदर जाए। पिंग पोंग अपडेटेड नेटवर्क कॉल। नेटवर्क कॉल तो नहीं मार रहा। How does the method calling works? Because I see no message from the WebSocket or any API on server. Client sends a message over the DDP, but मेरे को DDP पे भी मैसेज नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके। I think so we got it. Okay. Something अपडेट नहीं हुआ था क्या? Across reloads. ओके, कलेक्शन आईडी और ये चेंज कर दिया।
ओके, पिंग पोंग, ओके। ओके, क्रॉस रिलोड भी सेव हुआ। मैं इसको क्लोज करूं एंड देन ओपन करूं देन, तो भी सेव हुआ। सो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कैसे काम करता है। सो मीटियोर एंड, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ से फिर यहाँ से अपडेट असिंक्रोनसली, एंड इसमें भी आई थिंक अवेट की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक, डज अपडेट sy async require async await wrap? I don't think so, but maybe is already a promise. The Meteor newer async APIs returns a promise. This means you can use. Okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, but this is nice. Okay. तो अपना ट्रेडिशनली कोई भी फुल स्टैक फ्रेमवर्क होता है वो वर्क करता है एपीआईज के थ्रू, बट ये बंदा काम ही उस तरीके से करता है जिस तरीके से कोई काम नहीं करता। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग नहीं है क्या? नहीं है क्या? सो हमने अपडेट किया तो नीचे आ गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है 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 ठीक है। इसको अब अपन डाल सकते हैं मीटियोर में। आई थिंक सो ये डॉट मीटियोर इज हमारा dot meteor is like dot next hm hmr, ओके। तो ये अपना मोंगो डीबी फाइल ये सब स्टोर करके रखता है डीबी। ओके, so kind of like what we were trying to do with do we push it push it push it to GitHub? Nope, you generally don't push .meteor folder, at least not at all. Let me break down. You should push everything except the build and runtime stuff. Okay, and what about I want to browse this data in non v in non normally we use a class to browse.
चलो ठीक है. Okay, let's check their repo. Rocket dot this, this. ये रहा. Cursor dev container git pod डेवलपमेंट एप्स के अंदर अगर हम जाएं, मीटियोर के अंदर जाएं तो ये रहा डॉट मीटियोर. फिर एक नोट डाल रखा है. डेव बंडल एंड लोकल फाइल डाल रखी है. पैकेजेस प्रॉफिट डॉट चैट, बहुत सारे पैकेजेस हैं. तो मतलब लोकल फोल्डर इग्नोर करना है. फिनिश्ड अपग्रेड्स और आईडी. ओके. ब्राउजर एंड सर्वर वर्जन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. So we can do this. Get init, get add. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नोड मॉड्यूल्स नहीं ऐड करे ना भाई. टेस्ट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नो रिपोजिटरी. Meteor hello. ठीक है. And we did 12. Not bad. So this is, मतलब इधर तो कुछ है ही नहीं. मेन वर्क है इंपोर्ट्स के अंदर. ये सर्वर के काम देखता है, ये हमारे उसके काम देखता है. और ये सर्वर के अंदर क्या है? मीटियोर डॉट स्टार्टअप. सर्वर स्टार्ट हुआ है ये देख रहा है. और टास्क डॉट, ये टास्क कलेक्शन में से आ रहा है. एडेड फंक्शन डॉक्यूमेंट. अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट आता है तो देन डॉक्यूमेंट एडेड. एडेड टास्क और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है. सो नॉट बैड. सो वी कैन डू npm and इधर विल डू प्रिंट स्क्रीन. पीयर लिस्ट पे जाते हैं, थोड़ा एक मस्त डालते हैं भाई. अक्षय. checking out Meteor Framework. I recently came across this framework called Meteor. It's pretty new to me.
new to me, and that's why I tried learning some things. It's a full stack JavaScript framework, but it's different from what I other other frameworks. Explain Meteor to me and its key unique. The changes on the server are reflected on the client. No refresh needed. needed. It has MongoDB inbuilt.
Backend is changing drastically. Now, even for the basic app, things like queues, jobs, with jobs, queues, and everything implemented. अरे भाई, स्ट्रीम तो चालू रहेगी। तो अभी मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है। इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ये डीडीपी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोटोकॉल यूज करता है। सो बेसिकली एक वेब सॉकेट कनेक्शन बना रहता है आपका बाय डिफॉल्ट, एंड आप सर्वर साइड मेथड्स को डायरेक्टली फ्रंट एंड से कॉल कर सकते हो। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड वो आर्ग्यूमेंट पास करने वाला, मतलब हमने फटाफट से ग्रैब कर लिया। बट या कॉमन सेंस वाली बात है, बट हम में इतनी नहीं है। सो वी आर हैप्पी दैट वी गॉट समथिंग। एंड ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट, मतलब मोस्टली तो जीपीटी ने कोड कर दिया था।
बट हाँ, एक फंक्शन हमने खुद से कोड किया। ओके, एंड विल एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस फ्रेमवर्क। अपने जो रेपो बनाई है उसमें प्रोजेक्ट्स डालते जाएंगे, and then we'll see the repository that we are trying to contribute to, which is Rocket Chat. Let's see how it goes. And I'm thinking of writing an article at the end of the series, which will describe how to contribute to an open source, or how can we contribute, because I also don't know how. So we'll explore it and see if we can make some good contributions. I'm Kushad signing off. Bye bye, guys.